Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about yet another method for the synthesis of indoles. As I said that they are very vital biologically active moieties. So the method today we are going to look at you takes advantage of intramolecular Heck coupling. तो यहाँ से इस step में जो हो रहा है this is called the intramolecular Heck coupling. So what do we start is basically is with these ortho-haloanilenes, and these anilines have these olefins. So this is kind of a pendant that are attached to the olefin. So the name of this particular synthesis is Mori Ban Indole Synthesis. So we are going to look at the mechanism, examples, and it's a very interesting chemistry that is happening here. Could be pretty useful. जैसे कि मैंने आपको बोला है, the reason why I take this video so that you are familiar with such reactions, ताकि अगर आपको examples में यहाँ पर आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल में आपको थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हैं, बट बेसिक केमिस्ट्री जो हो रही है दैट विल बी दी सेम, ठीक है. सो द बेसिक आइडिया इज टू गेट यू गाइज फेमिलियर विद द केमिस्ट्री दैट इज हैपनिंग ओवर हियर. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So as I said guys, this particular reaction is all about the intramolecular Heck cyclization. So wait, what we have here is an ortho-haloaniline. ठीक है, ortho position पे what we have is a bromo group, which is a halo group, and here what we have is an aniline, and we can clearly see an olefin, okay, which is attached to a aniline. Now when we expose this to a palladium catalyst, then it undergoes intramolecular cyclization to give us the direct indole. So this is a very good example of intramolecular Heck reaction. So what are the important things to note here? If we have studied Heck reaction carefully, then we can clearly understand that the first step of the Heck reaction is the oxidative insertion of palladium 0 into this carbon bromine bond. But here in this case the palladium acetate is in +2 oxidation state. So सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? How does this palladium acetate getting converted into palladium 0? How it is getting reduced to palladium 0 oxidation state? And this is done with the help of this triphenyl phosphine as a ligand. सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म देख लेंगे हम. So this is how the palladium acetate is reduced to palladium 0. So in the first step what you have is the phosphine. It attacks the palladium acetate group. Being a good leaving group, it leaves. So in the next step, this acetate ion, it attacks this phosphorus. So palladium takes its electron and acetate group leaves. Okay, so now since palladium has taken its electron, it has reduced from palladium 2 state to palladium 0. Now it is this palladium 0 which will undergo oxidative insertion into this carbon bromine bond. उसके अलावा हम एक चीज देख लेते हैं, क्या है कि जो आपका भी एसीटेट रिलीज हुआ है, here this O negative it attacks the carbonyl. So these electrons they come here to form this very strong phosphorus oxygen bond. और जैसा कि हमने देखा है in case of Wittig olefination as well, the driving force for the reaction is the formation of this strong phosphorus oxygen bond. ठीक है, so that is why this reaction is happens pretty fast. The palladium is gets reduced to palladium 0 in presence of triphenyl phosphine. ठीक है. Now coming back to the mechanism, as I said, now we have generated palladium 0 species. So the first step is the oxidative insertion. तो पहला स्टेप जब आपको oxidative insertion होता है, हमको यहाँ क्या होता है, आपका palladium फिर से palladium +2 oxidation state में चला गया. अगर आपको इस if you have any doubt regarding the palladium chemistry or the Heck reaction chemistry, I have made a long video on the Heck chemistry, in fact on the organopalladium chemistry. Just go and watch that video, आपके सारे doubt clear हो जाएंगे. Okay. And in the next step what happens, this carbon palladium it adds on to this double bond in a cis manner. Again ये भी मैंने वहां explain किया हुआ है. So here we can clearly see this is an alpha position, this is a beta position. So this addition selectively happens at the beta position. इसकी होती है almost complete selectivity. So which gives rise to the formation of this particular compound, and then simply beta hydride elimination. अब palladium की यहाँ पर क्या, this is alpha, this is beta. So ये आपका जो beta hydride elimination होता है, ये भी syn elimination होता है. So what you end up getting is a formation of this palladium compound, जो कि अगर आपने Heck coupling पढ़ी है तो हमको पता है in presence of base ये किस तरह से फिर से कैटलिस्ट को हम रीजनरेट करते हैं. बट हम इसको भी थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं.
अब हमको पता है व्हाट वी हैव इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू द फाइनल मॉलिक्यूल, दिस इज नथिंग बट पैलिडेशन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन दोबारा से। उसका रीजन क्या है? रीजन इज दिस ड्राइव टू अचीव द एरोमेटिसिटी। अगर हम यहां पे देखें ओनली दिस पर्टिकुलर रिंग इज एरोमेटिक, पर अगर ये डबल बॉन्ड आइसोमर आइसो के अंदर आ जाता है देन दिस एंटायर सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक। सो इट इज दिस ड्राइव टू अचीव एरोमेटिसिटी जिसकी वजह से अगले दो स्टेप होते हैं। अगला स्टेप आपका क्या होता है? इज एडिशन ऑफ पैलेडियम हाइड्राइड। अब पैलेडियम हाइड्राइड आपका क्या हो रहा है? पैलेडियम आपका यहां पर ऐड हो रहा है और आपका हाइड्राइड यहां हो रहा है। आप मुझसे अब एक सवाल पूछ सकते हैं कि पैलेडियम आपका यहां ऐड हो रहा है, ठीक है, पैलेडियम यहां पे भी तो ऐड हो सकता था आपका, मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन आपका हाइड्राइड यहां ऐड हो रहा है और पैलेडियम इधर ऐड हो रहा है, ठीक है। रिवर्स भी तो हो सकता था, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी होता होगा। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम, यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम, कि जैसे ही आपको ये बनता है इट क्विकली अंडरगोस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन टू गिव यू द डिजायर्ड कंपाउंड। अब आपका एक बार ये इंडोल बन गया, दिस पार्ट कैन नॉट गो बैक। और ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखी हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पहला स्टेप है ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि ये कार्बन यहां पे इंसर्ट करता है। तीसरा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज द ड्राइव टू अचीव द एरोमेटिसिटी, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटाइजेस टू गिव यू द डिजायर्ड इंडोल। अब हमने यहां पर ये जनरेट स्पीशीज हो गई, हाउ दिस कैन बी जनरेटेड बैक इनटू पैलेडियम जीरो, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सिमिलरली हैक रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है, वहां पे भी हम बेस यूज करते हैं। सो when you treat with the sodium bicarbonate, what you generate is sodium bromide, water, and you expel the carbon dioxide, and what you generate is the palladium zero, and it is this palladium zero which further carry forwards the entire catalytic cycle. So it's a very good chemistry that they did in Mori Ban Indole synthesis. Let's look at one or two important examples. So the first example you can clearly see, again this is an example of ortho halo aniline, और aniline के साथ you can clearly see a pendant olefin. So अगर आप ऐसा substrate देखें तो you can clearly make out, अगर हम इसे palladium से expose कर रहे हैं you can clearly understand. So this is undergoing intramolecular hack to give you this particular indole, मतलब यहाँ पर आपका addition हुआ, here what you will end up getting is a methyl group. So a good example. Apart from that, what this is a modified substrate, but एक तरह से अगर हम देखें this is kind of a substituted aniline जिस पर आपके diallyl group है, and here what you have is a chloro at the ortho position, again exposed to the palladium catalyst. What do you end up getting is the formation of this particular indole, a very important example. और इसका हम last example देख लेते हैं. In this particular case as well, what you have is this this aniline, and the ortho position you have this bromo and this bromo. तो आप इधर भी साइक्लाइज कर सकते हैं, इधर भी साइक्लाइज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेक्टिवली सिंगल आपका साइक्लाइजेशन होता है, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कंडीशन व्हाट हैपेंस, दिस COCF3 ग्रुप दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू गिव यू द डिजायर्ड इंडोल। आप क्लियरली देख सकते हैं हियर व्हाट यू हैव इज दिस एलाइल ग्रुप, ठीक है, और यहां पर आपका ऑर्थो ब्रोमो है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म जैसा कि पीछे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। So this was all about the Mori Ban reaction. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, और आपको कमेंट करने में डर लगता हो तो you can just send me your questions on unlockchemistry@gmail.com. You can send me a question on my WhatsApp number which is in the description section. You can join the Telegram group, वहां पे भेज सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, as long as आपके डाउट क्लियर हो रहे हो, that is the most important thing, ठीक है। So thanks a lot for watching the video. Have a very good day.